अस्सलाम वालेकुम. So next result आपका main theorem है about the compactness, which says that compactness is a topological property. For example, if you have a continuous function from a compact space to any other topological space, so f is continuous and X is the compact set, is the compact space, then the image of a compact space is always compact. ठीक है? So that's why we say that compactness is a compactness is a topological property, क्योंकि continuity जो है वो इसको preserve करती है. So इसके लिए क्या है कि आप मैं इसकी सिंपल सी डायग्राम बना के पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. This is your x, this is your y. Here you have a function from f to y, and here you have your image set, that is f of x, and this is the subset of x. So this is your image set. So image set में अब कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे आइडिया ऑफ अ प्रूफ ये है कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली मैंने ये प्रूव करना है कि ये कम्पैक्ट है. कम्पैक्टनेस के लिए आई विल टेक एन ओपन कवर ऑफ दिस सेट्स एंड आई नीड टू फाइंड द ओपन सब कवर. तो उसके लिए मैं ये है कि ये मैं एक ओपन कवर इस तरह का ले लूंगी, अगर फर्ज कीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंगली अगर ये आपके यू अल्फाज हैं और इसके करस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे इनके इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे, जो कि अगर मैं फुल ओपन कवर का जब प्री इमेज लूंगी तो जो प्री इमेज का प्री इमेजेस जो होंगे वो एक्स के सबसेट्स होंगे. सो डेफिनेटली ये एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फाज जो होंगे ये कवर करेंगे एक्स को, और जब ये कवर करेंगे एक्स को, चूंकि एक्स ऑलरेडी कम्पैक्ट है और आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो ओपन सेट्स के प्री इमेजेस को ओपन ही रखती है. ओपन सेट्स अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो ये चीज जो होगी ये ओपन होगी नेक्स्ट में. सो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन होगी this will be the open cover of x, and at that time you will use the compactness of x and you will find the finite subcover. So finite subcovers के then अपने points पे जाके जो मैप करेंगे वो इमेज को कंपैक्ट करेंगे. बेसिकली आइडिया ये है. ठीक है, अब मैं मेन थ्योरम की तरफ आ रही हूँ, प्रूफ करने की तरफ. सो उसके लिए मैं प्रूफ कर रही हूँ. सो प्रूफ, so first of all you know that f of x is the subspace of y. okay, and let कर लेती हूँ मैं u is equal to u alpha such that alpha belongs to I is the index sets, is an open cover of f of x, the image set. अगर ये open है, so as f is continuous, so इसका मतलब ये है कि for u alpha open in x, open in y, implies f inverse of u alpha is open in x. Okay, so this is the definition of continuity. So using this definition, the collection f inverse of this cover is equal to f inverse of u alpha such that your alpha belongs to I. So this becomes the open cover of x using the continuity of x, open cover of x. So what does that, so using the compactness, of x, this cover has a finite subcover. So we get say f inverse of u1 and f inverse of u2 and so on. So this is the finite subcover f inverse of un. Okay, so this is a finite subcover of x. So if it's a finite subcover, so what does that mean? It's mean your x is equal to union for I from 1 to n f inverse of ui. So f is equal to this, then your f of x becomes your union for I from 1 to n ui. So कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेफिनेटली अगर x को
एक्स को फाइनाइट कलेक्शंस ने कवर लिया हुआ है, तो जब मैं उनके इमेजेस लेके जाऊंगी तो वो डेफिनेटली पूरे इमेज सेट्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो इट्स मीन दैट, सो दिस इम्प्लाइज दिस u1 u2 and un is a finite subcover. Finite subcover of f of x. तो अगर ये इसका फाइनाइट सब कवर है तो इसका मतलब ये है कि आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। और इसकी एक छोटी सी मैं क्रॉलरी आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक होम्योमॉर्फिज्म है फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट स्पेस टू अ वाई, सो द इट्स अ होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म आपको पता है होम्योमॉर्फिज्म क्या है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज बाइजेक्टिव and f inverse is also continuous. So f is continuous, f is bijective and f inverse is also continuous. So homeomorphism में क्या है कि ये compact space है तो इसका image भी compact होगा, ये compact space है तो इसका image भी आपका compact होगा. So under the homeomorphism I will say that every space that is homeomorphic to a compact space is compact, ठीक है। so अगर x आपकी compact है और जो आपकी f of x होगी इस केस में वो आपकी y होगी और y जो है वो होम्योमॉर्फिक है आपकी x के, तो y भी आपकी जो होगी वो compact होगी. so this is the topological invariant property. so this is the topological invariant of compactness. Yeah, the homeomorphic image of a compact space is always compact. Okay, thank you.